हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याराधना। दिस इज यूर आर सर। हमारा फिजिक्स का प्रोग्राम है एक्सीलेंस इन फिजिक्स। सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू टू क्रैक ऑल इंडिया रैंक्स यू शुड गेट कमांड ओवर द फिजिक्स। सो इसके लिए एक्सीलेंस को पीछे भागेंगे हम। सो इसमें पहले हम कर रहे हैं एडवांस क्वेश्चंस का डिस्कशन। सो लास्ट 10 ईयर्स में जेई एडवांस एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस दिया, ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाला है। चाहे जेई स्टूडेंट हो, नीट स्टूडेंट हो, आपको स्कोर आउट ऑफ करने के लिए ये एडवांस क्वेश्चंस का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहले हम शुरू करेंगे हमारा मैकेनिक्स का बेस्ट चैप्टर, दैट इज रोटेशनल मोशन। सो रोटेशनल मोशन का जेई एडवांस का क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाला है। लेट्स स्टार्ट आवर गेम। सी लुक एट दिस क्वेश्चन। इधर ये दिया था, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 1.5 kg। जो भी डेट दिया है वो डेटा इमीडिएटली हम इधर मेंशन करेंगे। दे गेव मास एज 1.5 kg and radius 0.5 meter and radius of that disk is 0.5 meter. This 1.5 kg immediately you can write it as 3/2 kg and it is 1/2 meter. And they gave is initially at rest on a horizontal frictionless surface. Three forces of equal magnitude F equal to 0.5 Newton. Force each one is 0.5 Newton is acting. That means half Newton are applied simultaneously along the three sides of an equilateral triangle. So diagram में हमको mention किया है, इधर साइड F SIF force act हो रहा है XYZ with its vertices on the perimeter of the disk. So a disk का vertices तीनों भी सर्किल का perimeter पे है। 1 second after applying the forces, the angular speed of the disk is, हमको ओमेगा चाहिए आफ्टर 1 second। सो इमीडिएटली आइडिया हमको इस पे जाना पड़ेगा। ये जो हमने PYQs प्रीवियस एडवांस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा है, इससे सिर्फ सॉल्यूशन डिस्कस करने का नहीं, साथ साथ में सॉल्यूशन के साथ मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी एनालिसिस देने वाला हूं, पूरा क्वेश्चन एनालिसिस देने वाला हूं। यू शुड गेट कमांड ओवर फिजिक्स नाउ, सो प्लीज फॉलो प्रॉपरली। ये डेटा में हमको पूछा है, इनिशियली रेस्ट में है, सो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0 एंड दे आर आस्किंग यू अबाउट फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इमीडिएटली माइंड में ये आइडिया लेना पड़ेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस अल्फा इनटू टाइम। टाइम दिया गया 1 सेकंड, सो हमको अल्फा चाहिए। आप अल्फा कैलकुलेट किया तो हमारा एक्सप्रेशन फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इनटू टाइम। टाइम 1 सेकंड दिया, इनिशियली ओमेगा नॉट 0, सो अल्फा वैल्यू रखे तो आपको ओमेगा आएगा। सो हमारा टारगेट इमीडिएटली अभी अल्फा कैसा पहचानना, हाउ टू फाइंड अल्फा वैल्यू। सो वे ऑफ थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पढ़ने को बाद फर्स्ट फोकस व्हाट यू वांट, यू शुड गो देयर। सेकंड फोकस क्या दिया है वो डेटा पे जाना पड़ेगा। सो फर्स्ट फोकस इज वी वांट एंगुलर वेलोसिटी फाइनली। सो अल्फा वैल्यू कैसा कैलकुलेट करेंगे, ये 3 फोर्सेस के वजह से 1 2 3, ये तीनों फोर्सेस के वजह से 3 टॉर्क आएगा। वो सभी टॉर्क्स एडिशन करो, टोटल टॉर्क आएगा। सो टोटल टॉर्क, नेट टॉर्क विल बी, टॉर्क नेट वैल्यू शुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, बेसिक आइडिया। अच्छा, फिर टोटल टॉर्क कितना, व्हाट इज टोटल टॉर्क वैल्यू, इसके लिए देखेंगे हम इधर। लुक एट दिस साइड, ये सर्किल का रेडियस दिया गया, मींस सेंटर से इधर तक, सेंटर से हियर तक, दिस वैल्यू दे गेव, दिस इज रेडियस r। इफ इट इज रेडियस r, दिस इज फोर्स डायरेक्शन। फोर्स डायरेक्शन को अबाउट दिस एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस। सो ऐसा एक परपेंडिकुलर लेंगे। हमको टॉर्क कैलकुलेशन के लिए फोर्स इनटू एक्सिस से फोर्स डायरेक्शन को परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स डायरेक्शन इज दिस, फिर फोर्स डायरेक्शन से
इधर एक्सेस हमने लिया तो दिस इज द एक्सेस, फिर एक्सेस से ये फोर्स डायरेक्शन को हमने ये परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, that is r perpendicular. So we should get this value. Here angle 30 होता है because it is going to form an equilateral triangle. Here angle 30, so this is r, so r perpendicular value will be, r perpendicular is this hypotenuse r sin 30 degree, so it is going to be r हमको 1/2 दिया गया है, radius 1/2 meter, sin 30 1/2, now it is going to be 1/4 meter. So r perpendicular आ गया, force value हमको दिया है 1/2, so torque you can calculate, net torque, so एक ही force के लिए, एक torque के लिए ये वाला force, for one force that is half Newton into r perpendicular is 1/4. So this is, we are getting torque due to only single force. लेकिन सेम सिनारियो इस फोर्स को भी इधर हम परपेंडिकुलर ले सकते, सो सेम हम वापस अप्लाई किया तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम इतना टॉर्क आएगा, सेम इसी फोर्स को भी हमने इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया तो अगेन दिस इज आर परपेंडिकुलर, अगेन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको सेम इतना अमाउंट टॉर्क आएगा. सो टोटल टॉर्क इज ए सम ऑफ दीज थ्री फोर्सेस टॉर्क्स. सो इसलिए इधर इंटू 3 करता हूं सच दैट हमको टोटल टॉर्क आएगा. ये टोटल टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द, इट इज ए डिस्क, दे सेड डिस्क ऑफ मास इतना, सो डिस्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2, मास इज 3/2 m r स्क्वायर, r is 1/2, स्क्वायर किया तो 1/4, so m r square upon 2 1/2, this everything is moment of inertia of the disk about an axis passing through this point O and bache alpha. So now if you do simplification we are getting alpha. So what is that alpha value? Just look at that simplification. 3/2 gets cancelled, this 1/4 gets cancelled and this 2 goes to that side, then alpha value will be 2. Alpha 2 आ गया तो हमको इसी एक्सप्रेशन में if you apply then final angular velocity will be initially 0 plus alpha 2, टाइम दिया था 1 second, in 1 second बोल के बोला and 1 second here it is there, so alpha value you got 2, so 1, so it is 2 radian per second. So this is the answer. A beautiful question, a small analysis. ये एनालिसिस आपको अच्छा तरीका से समझा तो रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर ट्राइंग फॉर जेईई बेस्ट स्कोर और यू आर ट्राइंग फॉर नीट बेस्ट स्कोर, दोनों को भी इस तरह क्वेश्चंस फायदा होता है. एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस हमने कैसे तरीका से किया, ये परफेक्टली हम अप्लाई किया तो हमको स्कोर इंप्रूव होने को ज्यादा चांस रहता है. चलो आगे बढ़ेंगे और एक प्रॉब्लम को पास. Now see, here is another one beautiful question in 2015 advance. So a question में ये बोला, two identical uniform discs roll without slipping. So roll without slipping on two different surfaces AB and CD, starting at A and C with linear speeds V1 दिया है and V2 here not gave, and always remain in contact with the surface. What is the meaning of this line? Always remain in contact with the surface. That means when this incline came from here, here also it is in contact, here also it is in contact. That is the meaning of that. If they reach B and D with the same linear speed, finally इधर आने को बाद दोनों का भी स्पीड सेम बोल रहा है. फाइनली इधर आने को बाद दोनों का भी सेम स्पीड v. So they are saying, and v1 is 3 meter per second, then v2 in meter per second. ये v2 meter per second में चाहिए. So this v2 is question mark. So now let's start the game. हमको v2 चाहिए. बात ऐसा है कि किधर भी फ्रिक्शन नहीं है. So फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं है. Uniform rolling without slipping. So as they said rolling without slipping,
you can use the idea already friction is exist, because friction होगा तो ये without slipping प्योर रोलिंग में जा सकता है. सो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में फ्रिक्शन है ये मेंशन कर रहा है, लेकिन हमको ये फ्रिक्शन से अभी कुछ भी लेना देना नहीं है. आपको दोनों को फाइनली स्पीड सेम बोला. यू कैन यूज नाउ द इनिशियल टोटल एनर्जी एंड फाइनल टोटल एनर्जी, बिकॉज इधर इनिशियल सिचुएशन से फाइनल सिचुएशन तक प्योर रोलिंग कंटिन्यू हो रहा है. सो पहले क्वेश्चन पढ़ने को बाद कौन सा कॉन्सेप्ट पे जाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हियर दैट कॉन्सेप्ट इज इनिशियल सिचुएशन फाइनल सिचुएशन में प्योर रोलिंग कंटिन्यू हो रहा है. सो यू कैन यूज total energy initial should be equal to total energy final. You can equate these energies. अच्छा, so equate करो कैसा? Initial energy, so linear energy is of इसका mass m लिया तो into v1 square, that is 3 square, that means 9 of mv square. linear kinetic energy लिया था, and angular kinetic energy whatever it is without slipping बोला था. without slipping means pure rolling है. pure rolling होगा तो half I omega square लेना पड़ेगा. so half I, this is what it is, a disc को moment of inertia mr square by 2. so mass m and इसका radius r square. so this is moment of inertia mr square by 2 half I omega square. omega is V by R, omega equal to V by R, because pure rolling without slipping is said, that means omega will be, you can take it as omega equal to V by R. So omega square, so V square by R square. This is initial kinetic energy, and already this V value initially here they gave 3, so 3 square, that means 9 by V by R whole square, omega square. So V square by R square. So here R square. So this is, you are getting initial energy. Not only that, it is initially at a height 30 meter. So potential energy is m g, and g value they gave 10. So you can take directly g value 10, and this height is h. h is 30. 10 into 30, it is going to be 300. So this is total initial energy is equal to, you should take total energy final. Finally इधर आने को बाद potential energy नहीं है, only kinetic energy है, that is speed is v if you take. So the kinetic energy will be finally linear kinetic energy of mv square plus angular kinetic energy of I is mr square by 2 of I omega square. omega is v by r. Finally omega is v by r. So square किया तो so v square by r square. So this is the initial basic step. Here total energy and here total energy I am equating. Why I am able to use the total kinetic energy same initial and final? Because pure rolling starting to ending tak hai. So from starting onwards the pure rolling is there. So then what it is going to be, this value from this, if you do simplification, we are getting this v value here, r square gets cancelled. So 1 by 4 mv square, here 1 by 2 mv square. So 1 by 4 mv square, 1 by 2 mv square. So it is going to be 3 by 4 mv square, and this side also r square get cancelled, and 9 by 4 mr square. 9 by 4, so this is r get cancelled, 9 by 4m plus 9 by 2m, 9 by 2m plus 9 by 4m plus, and what about this value? So this is 300m. So this is the expression, say this is equation number 1. This is equation number 1 for this case. Same analysis apply for this second case also. In second case also, after coming to down, here the same reference line. So these are the same reference line. So initially 30 height पे होगा तो इस केस में initially 27 मीटर पे है. So finally इसका स्पीड भी v. मतलब इधर फाइनली आने को बाद जो काइनेटिक एनर्जी है
जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है एंड इधर भी टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम. सो इज इक्वल को इधर साइड आपको 3/4 mv² जो आया, इसी केस में भी फाइनली 3/4 mv² काइनेटिक एनर्जी ऐसा ही रहेगा. So this case 3/4 mv² values will be same. इसलिए इसको अप्लाई किया तो इसमें भी 3/4 mv² यास्टीज आएगा फाइनल एनर्जी, बट इज इक्वल को इधर साइड एनर्जी चेक किया तो एंड हियर हमको 300 m आया. दिस इज 27 इंटू जी वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई किया तो 270 m आएगा प्लस and here this is 270, this is initially height potential energy plus either kinetic energy is going to be of m, this velocity v2 square plus rotational kinetic energy will be of I is mr square by 2 and omega square, omega is v by r, so v2 square upon r square. So if you go simplification, r square cancel, and here you are getting mv2 square by 4, mv2 square by 2, that means 3 by, this is going to be mv2 square by 4 plus mv2 square by 2. So total is 3/4 mv2 square plus 270 m is equal to 3/4 mv square. Say this is equation number 2. Please focus on concept than simplification. Concept is, in both the cases I am applying conservation of energy. Initial conservation of energy, initial and total energy, final total energy I equated. In case 1, this is A case, this is AB path, and this is CD path. So AB path को CD path को दोनों को एक्सप्रेशन डाला था, so दो इक्वेशंस आया. नाउ ए वाला इक्वल है, so दोनों इक्वेशंस आप इक्वल कर सकते हैं, इक्वल करके m कॉमन करके कैंसिल कर सकते हो, देन आपको v2 एक ही है बचे, the remaining is only v2 letter. So if you equate these two, if you do simplification, the v2 value you will get easily, the v2 will be 7 meter per second you are going to get. So to save the time, I am going to skip simplification such that I can take more good problems, advanced problems. Please my dear students, main idea देके main steps में mention करने को बाद please you try simplification and bring the answer such that आपको ज़्यादा practice भी हो जाएगा, मैं और ज़्यादा अच्छा क्वेश्चंस भी ले सकता हूँ. ये दोनों इक्वेशंस जस्ट 3/4 mv² 3/4 mv² दोनों इक्वल करो, m कॉमन करो, कैंसिल करो, सिंप्लीफिकेशन करते जाओ, v2 वैल्यू आएगा, v2 आपको आने वाला है 7 मीटर पर सेकेंड. You should get this one. It's a beautiful question, beautiful analysis. So अच्छा तरीका से फॉलो करके प्लीज क्वेश्चन से मेंटेन कीजिए, देन we can go to another one beautiful question. चलो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर इज द क्वेश्चन. दिस इज एडवांस 2015 में पूछा गया है. A ring of mass capital M and radius r is rotating with the angular speed omega about a fixed vertices axis passing through its center. वो with 2 point masses each of mass m/8. So these point masses are m/8. These are m/8 at rest at वो. Initially इधर है, वो को पास वो दोनों particles rest में है. These masses can move radially outward along two massless rods fixed on the ring as shown in the figure. At some instant, the angular speed of the system is 8 omega by 9. It is very, very interesting point. 8 omega by 9. And one of the masses is at a distance 3r by 5. ये दोनों में से एक मास है 3r by 5 दूर में है from वो. At this instant, the distance of other mass from वो is. ये क्वेश्चन पढ़ने को बाद
इमीडिएटली आपको ध्यान में ये चीज आना चाहिए, in this question he is saying indirectly external torque is not acting on the system. Where is external torque? Torque is not acting on the system. You check, and it is initially with angular velocity omega, the ring is rotating. So now these two particles, because of centrifugal force acting on the particles, they go away from the axis. We know this concept. As these two particles are going away from the axis, the halo nature of the system will increase as such that पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा. जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होते जाएगा, ये एंगुलर वेलोसिटी कम होते जाएगा. इसलिए at a particular instant he gave you angular velocity 8 omega by 9. They said clearly angular velocity 8 omega by 9 at a particular instant. So initially omega है 8 omega by 9 means it is less than omega. That means angular velocity कम हो गया because moment of inertia increase हो गया. Moment of inertia क्यों increase हो गया? Halo nature increase हो रहा है. Because these two particles are going away from the axis means halo nature is increasing. अच्छा, so फिर omega कम हो गया. Then he is asking, one particle is at a distance 3r by 5 and he is asking another particle distance from the axis. The idea is whenever external torque on the system is 0, yes, torque external on the system is 0, so angular momentum initial should be angular momentum final. अच्छा, initial angular momentum कितना? रिंग बोला गया है, रिंग का मास m and radius r, so that's why ring moment of inertia is mr square. This is moment of inertia of the ring initially, and these two particles are at along the axis at the origin, so that's why no perpendicular distance. इसलिए particles का moment of inertia initially 0 and initial angular velocity omega, I omega, this is initial angular momentum is equal to final angular momentum. So ring moment of inertia mr square plus ये particles का moment of inertia लेना पड़ेगा. First particle moment of inertia के लिए first particle mass is m by 8. They gave mass of each particle as m by 8. So m by 8 mass of the particle into mr square is the moment of inertia of the particle. So m by 8 into omega, and he said at that instant that one particle is at a distance 3r by 5, they said. M and the particle is at a distance 3r by 5. ये 3r by 5 को स्क्वायर किया तो 9r square by 25. This is moment of inertia of the one particle. And another one particle moment of inertia is another one particle mass into वो दूसरा particle कितना दूर में है वो तो पूछ रहा है क्वेश्चन में. So the another particle is at a distance from the axis, for example x मान लो, so that is going to be that x square, x value you need to find out. This is total moment of inertia of the system, total moment of inertia of the system, and at this instant its angular velocity is 8 by 9 omega. Moment of inertia into angular velocity, whole system angular momentum finally is equal to initial angular momentum of the system. So now what we are going to get? Now we will get this x value. बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, x value find out करना. So कितना होगा x value? Let's try. So सब में से ये omega cancel हो गया. Then m also we can take cancel. So here r square we left is equal to here r square plus, and here also r square is there. So r square plus r square 9 by, and this 9 by this 25 eighths. So 25 eighths are 25 fours 100, 25 eighths 200.
So 9r square upon 200 plus m cancelled. So x square by 8. This whole expression into this omega cancel and 8 by 9 we left. So what about next one? और थोड़ा simplification करेंगे. So this is if you take LCM as 200, so 200 r square plus 9 r square, 209 r square, 8 200 में, so it is going to be 25 x square. So that is equal to, you can write this expression as 209 r square 200 r square plus this is 9 r square 209 r square plus, and this is 25 x square upon that this is 200 into this 8 by 9 is yes please. So we got r square is equal to this expression. Just we need to go for simplification little bit, then we will get this x value. So what we are going to get, check it, x value. थोड़ा simplification के आप भी focus रखो. So then this is 200 and this is 8 by 9. 8 by 9 if you take this side, that is going to be 9 by 8 and 200 this side. So finally we are going to get that 200 into r square and this is 8 by 9. So if it comes this side 9 by 8, then it will be equal to this expression 209 r square plus x square. So 25 x square. 25 209 r square plus 25 x square. So what about x value? 209 r square, you have to bring this side, then take r square common. So r square in bracket 200 by 8, it is 25. 25 into 9. 25 into 9 will be 25 into 10 will be 250 and 25 into 9 will be 225. So 225 and minus this side 209 r square. So 209 r square to common, that is equal to 25 x square. Next 225 minus 209, it is 25 minus 9, it is going to be 16. 16 r square equal to 25 x square. So that implies x will be, so 16 by 25 and root, it is 4 by 5 r. So our answer will be 4 by 5 r. This is. So my dear students, हमने क्या किया था क्वेश्चन में, yes, based on the given data, there is no external torque. Whenever there is no external torque, happily you can use conservation of angular momentum. And one very important point, कभी भी external torque 0 लिया तो be conscious about which point? About, this is I am taking about point O. About point O, external torque is not there. So then conservation of angular momentum also about point O. So remember my dear students, rotational mechanics में कभी भी external torque हम calculate कर रहा होगा तो about which point is very important. Conservation of angular momentum apply किया तो B, about which point is important. जो point पे हमने torque 0 मानता है उसी point पे है हम external torque नहीं मान रहा है. So that's why about that same point you should take conservation of angular momentum. This kind of conceptual analysis is very important. So beautiful question. Make a note of this. Then we'll go forward and we'll take another one question. See, this is advanced 2015 May. So another one question. The density of the two solid spheres A and B of the same radius R vary with radial distance as k r by capital R and r k r by capital R whole power 5 respectively. K is a constant. The moments of inertia of the individual spheres about the axis passing through their centers IA and IB respectively. IB by IA equal to n by 10, then the value of n is. So integer question है, advance 2015 में पूछा गया. पहले ये बॉडी को बी बॉडी को दोनों को भी हमको डेंसिटी ऐसा वैरी हो रहा है. So now we'll take solid sphere. They said they are solid spheres.
ये सॉलिड स्फीयर को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला हमको मालूम है, सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr square. But here the interesting thing is density is not constant. When density is not constant, we are not supposed to take directly as 2/5 mr square. So क्या करना चाहिए, ऐसा काम करेंगे, ये स्पीयर को सेंटर से थोड़ा दूर में, फॉर एग्जांपल सेंटर से x दूर में मैंने एक छोटा हैलो शेल लेता हूं. दिस इज वन स्मॉल हैलो शेल which radius is x and its thickness is dx. अभी इसी हैलो शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दिस हैलो शेल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी स्मॉल रहेगा, दैट इज di, दैट इज गोइंग टू बी, इट इज शेल, हैलो शेल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 इसका मास dm इंटू इसका रेडियस x स्क्वायर. 2/3 dm x square is the moment of inertia of this small hollow shell. अच्छा, ये स्मॉल हैलो शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम होगा, तो ये x वैल्यू वेरी हो रहा है 0 से इधर तक, मींस कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R, इतना दूर तक ये x वैल्यू हो रहा. सो इफ यू डू इंटीग्रेशन from the limits 0 to capital R, you are able to get that whole body moment of inertia. अच्छा, फिर dm कैसा लिखना सर? लिखेंगे dm हम रिप्लेस करेंगे, डोंट वरी, बिकॉज here dm is there, here x is there, so don't commit integration directly. So try to change this dm in terms of dx. ये बेसिक से इंटीग्रेशन के लिए हर बच्चे याद रखना है. सो अब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ. So this integral di will be equal to, so this is a 2/3 constant, integral dm, ये छोटा पोर्शन का मास कितना, so वॉल्यूम डेंसिटी रो इनटू ये छोटा थिन शेल को वैल्यूम, so its surface area is 4πx square and इसका thickness है dx, this is volume of this small thin, so density into volume will get that mass dm into x square is as it is. And what about the density value? Density of the whole sphere will be total mass of that sphere upon, anyway they gave this density in terms of this, so you have to replace that one there. So that is equal to integral di will be I, and the remaining terms here constants take outside, so 4 pi took outside and this 2/3 is there already anyway. So integral rho, this is for A body we are doing, this is the body for A body. So the density of A, they gave k smaller by capital R. So k smaller, here instead of smaller I took this x, so you can take this r as x also. I considered in this question that r as x, so x by this capital R, 4 pi gone out, so into this x square is there and dx is there, already another one x square is there. So what about this value, my dear student, please? So this is going to be 8 pi by 3 and the constant, this r is constant, take out x square, x power 4 and another one x power 5, k also constant, take out, and this is r, integral x power 5 dx, so x power 6 by 6 and limits 0 to that r. So now this value will be this is 8 pi by 3 and k by r, and this value substitute r, so r power 6 upon 6, so r one time gets cancelled, then you are going to get r power 5, either 6 1 and 6 3 is 18, so 8 pi k r power 5 by 18, so 18. This is moment of inertia of the A sphere. सेम इस तरीका से हमने बी स्फीयर को भी कैलकुलेट करेंगे, सो हमको आई बी आएगा. सो चलो आई ए आई बी दोनों कैलकुलेट करके हमको आई ए आई बी बाई आई ए डालना पड़ेगा, देन हमको एन वैल्यू आएगा.
चलो एडवांस का क्वेश्चन से मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ये टाइम भी ज्यादा लिएगा, लेकिन भी एडवांस क्वेश्चंस डिटेल में आपको डिस्कस किया तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, ज्यादा फायदा मिलेगा। सो चलो एक क्वेश्चन में अभी आईबी के लिए क्या करेंगे। सो सेम आइडिया, small moment of inertia is going to be, so 2 by 3 dm. Dm is density of the b body into volume of the small thin b body को भी सेम तरीका से डायग्राम हम इमेजिन कर सकते हैं। दिस इज फॉर बी बॉडी, इसमें स्मॉल थिन ले लो, same like this kind of diagram. So this one is volume 4 pi x square into dx. This is whole mass of that small thin shell 2 by 3 m, and the diameter, that radius is x square. So इधर रो b हमको जो दिया वो रखना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन किया तो दैट इज विल बी I, so 2 by 3 and integration also there. So constants take out, that is 4 pi. So integral rho b will be r power, r is here I took as x, so x power 5 by denominator में r, so r power 5 into here x square is there, so x power 4 into dx. Now it is going to be r power 5 take out, so 8 pi by 3 r power 5 integral x power 4 x power 5 x power 9 integration किया तो x power 10 by 10, and the limits will be 0 to r, so 0 to r. So r if you submit here, r power 10 r power 5 cancel किया तो r power 5 बचेगा। Here we are getting 8 pi r power 5 numerator में बचे upon, this is 10, 10 3 is 30. So 8 pi r square, and k is there anyway, here constant is there, so that k came out, so k is there anyway, so k. So here 8 pi k r power 5 by 18, 8 pi r power 5 k by 30. So this is moment of inertia of the second body, moment of inertia of the first body. IB by IA आप ला ले तो, so IB upon IA it is going to be, इसमें 8 pi r power 5 k, 8 pi r power 5 k cancel जाएगा, and इधर 1 by 30 बचे, इधर 1 by 18 बचे, so 1 by 30 upon 1 by 18, now it is going to be 18 by 30. So 18 by 30 means it is 9 by 15, and they gave this value as n by 10. So equate this value is equal to n by 10. So n by 10, if you take 10, take this side, 90 by 15. So n value you are getting 6. So beautiful question. हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ए बॉडी एंड बी बॉडीज को कंपैरिजन को बारे में है। सो ये क्वेश्चन अच्छा तरीका से इंटीग्रेशन यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 2 by 3 mr स्क्वायर 2 by 5 mr स्क्वायर ये जानता है, लेकिन उससे काम खत्म नहीं होगा। कभी वेरिएबल डेंसिटी दिया तो हमको एक छोटा शेल इमेजिन करके उसको इंटीग्रेशन करके टोटल बॉडी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ऐसा लाना पड़ेगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड ब्यूटीफुल एनालिसिस। चलो आगे बढ़ेंगे और एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन लेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट कंटिन्यू अवर डिस्कशन। There is another one beautiful question, my dear students. Let's see here. It is this is 2016 advanced का question है। A uniform wooden stick of mass, this is 1.6 kg and length L, rest in an inclined manner on a smooth vertical wall of height h. This h is less than L, such that the small portion of the stick extends beyond the wall. So पहले इसको इमेजिन करेंगे। This is wall height h, for example, this is floor. ऐसा एक स्टिक रखा है, उन्हें कहा स्टिक कैसा, दिस इज स्टिक फॉर एग्जाम्पल। स्टिक कैसा रखे तो ये थोड़ा पोर्शन इधर छोड़ दिया, सो दिस इज स्टिक and this is wall. Okay,
the reaction force on the wall, the reaction force of the wall on the stick is perpendicular to the stick. So stick को perpendicularly reaction force act हो रहा है. This is that reaction force N. Wall stick पे reaction force ऐसा stick को perpendicularly apply कर रहा है. The stick makes an angle 30 with the wall, and the stick makes an angle 30 with the wall. So wall से इधर 30 डिग्री कर रहा है, याद रखो. The wall and the bottom of the stick is on a rough surface. This surface is rough. Good. The reaction of the wall on the stick is equal in magnitude to the reaction of the floor on the stick. Floor stick पे reaction ऐसा करेगा. ये भी n बोला है. So beautiful analysis question. So जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो यास्टीज में डायग्राम में रिप्रेजेंट करने को कोशिश कर रहा हूं. So this is normal and this is also normal. This is normal. And they said the ratio of H by L and the frictional force F at the bottom of the stick car. हमको H by L वैल्यू चाहिए and frictional force वैल्यू चाहिए. So this is the diagram. चलो हम काम शुरू करेंगे. अभी ये स्टिक को बॉटम पॉइंट से L/2 दूर में, so total length of the stick L माने तो वो दिया है. So center of here, so for this it is gravitational force mg रहेगा. So इधर से इधर तक हमको ये लेंथ होना चाहिए L/2. टोटल लेंथ L होगा तो दिस इज L/2. ओके. अभी फ्रिक्शन के लिए ये बॉटम पॉइंट पे ऐसा इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स है. दैट्स व्हाई इट इज नॉट एबल टू मूव दिस साइड. सो डेफिनेटली बॉटम पॉइंट पे इधर से फ्रिक्शन फोर्स है, इसलिए ये पोर्शन रॉड रेस्ट पे रह रहा है. लेकिन ये फोर्स को बैलेंस करने के लिए जरूर इसी डायरेक्शन में फोर्स कुछ तो होना चाहिए. ब्यूटीफुल क्वेश्चन. लेकिन ये नॉर्मल तो वर्टिकल है, सो इसका कंपोनेंट इधर से आ नहीं सकता. एंड ये n का कंपोनेंट्स लिया तो इसी डायरेक्शन में ऐसा हमको ये n का कंपोनेंट आ सकता है. सो दिस इज 30, देन रिमेनिंग इज 60 एंड योर एंगल विल बी अगेन 30. This is the line and 30 and this is 60. Again here 30 n component this side n cos 30 and upward को n sin 30. Correct. Now this side force, this friction should be equal to this side force n cos 30. This n cos 30 will be √3/2 and this is friction F. And friction force चाहिए आपको and vertical forces बैलेंस करेंगे. vertically upward n plus and here n sin 30 will be 1/2. vertically this force and this force should be equal to downward force gravitational force mg. So n plus n/2, this is 3/2n is equal to mass they gave 1.6 and g value also 10 they gave. So this is 16. So 2/3 n will be equal to 2/3 and it is 16. 1.6 into 10. So you got 2/3 16. Keep this like that and n value इधर submit करो, आपको f आ जाएगा immediately. The f will be n value here 2/3 into 16 and √3/2 and this is going to be 16 2, so 32/6. 32 √3/6. 32, this value will be 32 √3/6. Options में friction where we are getting that इधर actually ये 2 cancel कर दे तो 16 √3/3. So 16 √3/3, 16 √3/3, 16 √3/3, 8 √3/3. So this is not an answer. ये तीनों में हमको एक आंसर है. That is 16 √3/3, 16 √3/3, 16 √3/3. So हमको रास्ता नहीं, हम वापस ये h/l वैल्यू कैलकुलेट करना ये पड़ेगा. So अभी मैंने क्या किया था,
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आइडिया यूज किया। अभी तक डायग्राम ड्रा करके मैंने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आइडिया यूज करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल फोर्सेस मैंने इक्वल किया एंड वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल फोर्सेस मैंने इक्वल किया, देन मेरे को आया है ऐसा इक्वल किया तो एन वैल्यू आया एंड फ्रिक्शन वैल्यू आ गया, फ्रिक्शन का काम हो गया। लेकिन अभी ये h/l वैल्यू कैलकुलेट करना कैसा? ये h/l वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं ये काम करता हूं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सो बिकॉज बॉडी इज एट रेस्ट, whenever the body is at rest, it is in translational equilibrium as well as rotational equilibrium also. So rotational equilibrium में होगा तो इस पे नेट टॉर्क इक्वल टू 0। सो अभी कौन सा भी एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, उसी पॉइंट पे नेट टॉर्क कैलकुलेट करता हूं, 0 को इक्वल करता हूं। सर फिर कौन सा पॉइंट लेते हो नेट टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए? वो थोड़ा वाइज तरीका से सोचे तो जो पॉइंट से थोड़ा ज्यादा फोर्सेस जाएगा वो पॉइंट को अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करो, काम इजी होता। फॉर एग्जांपल इधर ये पॉइंट हमने कंसीडर किया ना, इफ यू सी दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे ये एन जा रहा है, ये एफ जा रहा है, सो ये दोनों को टॉर्क से अबाउट दिस पॉइंट 0, आपको बचे सिर्फ ये एम जी एक फोर्स बचे, इधर ये एन एक बचे, ये एन एंड दिस एम जी, ये दोनों फोर्सेस अबाउट दिस टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स इसी पॉइंट से जा रहा टॉर्क 0, फ्रिक्शन भी इसी पॉइंट से जा रहा टॉर्क 0, आपको बचे सिर्फ ये वाला एम जी एंड ये वाला एन, ये दोनों की वजह से टॉर्क आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा चलो शुरू करेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, टॉर्क नेट शुड बी इक्वल टू 0। ये mg क्या करेगा, ये mg टॉर्क कैसा आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस प्रोवाइड करेगा एंड ये n टॉर्क आपको क्लॉकवाइज सेंस प्रोवाइड करेगा। mg विल प्रोवाइड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एंड दैट n प्रोवाइड्स क्लॉकवाइज टॉर्क। सो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए साइन माइनस आएगा। mg के लिए टॉर्क कितना, दैट फोर्स mg इनटू टॉर्क को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना चाहिए। दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, सो mg को इसको बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वैल्यू लेना पड़ेगा। सो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वैल्यू कितना होता है l/2 कंपोनेंट दिस साइड, इधर 30 बोले तो इधर 60 होगा, सो l/2 वैल्यू दिस साइड l/2 cos 60, l/2 cos 60 वैल्यू 1/2, दिस इज टॉर्क ड्यू टू mg एंड n के वजह से आने वाला टॉर्क को माइनस करता हूं एंड n इज दिस साइड, सो n फोर्स से इसी एक्सिस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना चाहिए। n डायरेक्शन इज दिस, n को ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सो ऑलवेज रिमेंबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स लेना पड़ेगा। ये फोर्स एंड ये डिस्टेंस दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये mg एंड ये वाला परपेंडिकुलर है दोनों, इसलिए सीधा मैंने मल्टीप्लाई किया। सेम तरीका से n एंड ये पूरा वाला परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, आर परपेंडिकुलर, सो इसलिए माइनस दैट n इंटू आर परपेंडिकुलर, दिस आर परपेंडिकुलर इधर से इधर तक ये वैल्यू हमको अलग से निकालना पड़ेगा। सो ऐसा आया तो मैं इसको आर परपेंडिकुलर कह रहा हूं, ये वाला h बोला है, सो दिस इज दे गेव 30, सो इमीडिएटली इफ यू अप्लाई cos 30 here, so this is adjacent side h upon hypotenuse r perpendicular, so r perpendicular value you will get here, so h by cos 30 root 3 by 2 2 पर जाएगा 2h by root 3, so this r perpendicular, so this is net torque should be equal to 0, so mg this ll4, so mgl by 4 माइनस इधर लाओ इज इक्वल टू n वैल्यू आपको ऑलरेडी इधर आया, सो 2/316 ऑलरेडी यू गॉट हियर n वैल्यू इनटू r परपेंडिकुलर इज 2h अपॉन रूट 3। ब्यूटीफुल, आपका काम हो गया। मेनली आपको एंड में ये पूछ रहा है, आपको दिस इज h/l चाहिए, h अपॉन l चाहिए, m वैल्यू दे गया 1.6, g वैल्यू 10, so this is mg value 16, already here 16 is there, get cancel
and 2 to 4 is there. So 4 and here 3 root 3, take this side, 3 root 3 upon 4, 4 will be 16 and 3 root 3. So that implies that h by L value will be, h upon L value will be here. So this is 3 root 3 by 16. So 3 root 3 upon 16 is L value, h by L value, and f value is 16 root 3 by 3. See, h by L value 3 root 3 upon 16. So option 4 is your beautiful answer. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन में मेन कैच पॉइंट क्या है, इधर हमको टोटल रॉड का लेंथ ये पूरा इधर सस्पेंड नहीं है, ये छोटा पोर्शन स्टिक के ऐसा साइड को आ गया है. फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट गलती से ये जो आर परपेंडिकुलर ये रॉड का लेंथ मान के, दिस इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ द रॉड, ये पूरा रॉड लेंथ नहीं है, रॉड तो और थोड़ा भी इधर है, इधर साइड है, रॉड और थोड़ा उधर है, ये पूरा मिलके लेंथ एल है. लेकिन इधर क्वेश्चन में आपको आर परपेंडिकुलर अबाउट दिस पॉइंट टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ ये वाला चाहिए. इसके लिए मैंने एच आइडिया यूज करके देन इधर आर परपेंडिकुलर वैल्यू लिया था. कोई स्टूडेंट गलती से ये पूरा लेंथ को एल माने तो ऐसा मान के कैलकुलेट किया तो रॉन्ग आंसर आता है. लेकिन भी वो बच्चे थोड़ा तकदीर वाला है, बिकॉज ऐसा कैलकुलेट किया तो जो आंसर आएगा ये क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में वो आंसर नहीं है. सो देन स्टूडेंट थोड़ा रियलाइज हो के अरे गलती किधर किया बोल के चांस मिलता है. सो दिस इज नॉट इक्वल टू एल, एल पूरा ये है, सिर्फ इतना ये हमको चाहिए, वो लेके एक्सप्रेशन करके नेटवर्क लेके सिंप्लीफिकेशन करते गया, then we got this answer. It's a beautiful question. Please my dear students, I'll request everyone follow concept perfectly to get excellence in physics. आपको concept पे कमेंट आना चाहिए. concept कमेंट कैसा आएगा, एक लेवल को बाद, एक लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स को बाद concept पे कमेंट और बढ़ने के लिए ब्यूटीफुल एडवांस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. हमारा प्रोग्राम में ये स्टेज 1 फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम में मैं एडवांस का क्वेश्चंस कर रहा हूं. सो फॉलो एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस वर्क. आप सब बच्चे को ये एडवांस प्रॉब्लम्स ज्यादा फायदा होता है. सो आपको अगेन नेक्स्ट वीडियो में, एक ही वीडियो में सभी PYQs क्लियर करना इतना पॉसिबल नहीं है. एंड आई टुक दीज PYQs नाउ एंड आई विल टेक अनदर फ्यू PYQs also. Here are a few other PYQs also we can discuss tomorrow. So I am going to close this PYQ here, and in next class we will discuss few more rotation motion PYQs. ऐसा advanced PYQs सभी एक एक चैप्टर को खत्म करके टोटल फिजिक्स का एडवांस PYQs बेस्ट में खत्म करके आपको देने वाला है. सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, एंड ये आपको फायदा हो रहा बोले तो दूसरा बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी फायदा होता, ये वीडियो को आप ट्रांसफर कर सकते हैं आप फ्रेंड्स के साथ. तो मिलेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.